وحدثني الحسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال: حدثني الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن لله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. اسم الكتاب صحيح مسلم. الحديث رقم 2002। हुक्म बिन मीना से सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर और सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बयान किया कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना के फरमाते थे, अपने मिंबर की लकड़ियों पर के लोग जुमा को छोड़ देने से बाज आ जाएं, नहीं तो अल्लाह ताला उनके दिलों पर मोहर कर देगा कि वो गाफिलों में से हो जाएंगे। किताब का नाम सही मुस्लिम। हदीस नंबर 2002। On the authority of Ham bin Mina, Sayyidina Abdullah bin Umar and Sayyidina Abu Hurairah Razi Allah anhu narrated that they heard the Messenger of Allah, peace be upon him, saying on the wood of his pulpit that people should refrain from skipping Fridays, otherwise, Allah will seal their hearts that they will be among the heedless. Book name Sahih Muslim. Hadith No 2002.